Stage a mega stir in Poonch against Jammu and Kashmir targeted killings, and that's the big news at this hour, with the BJP workers raising slogans and taking to the streets with respect to those killings. Pakistan sponsored Islamic terrorists have, of course, shot down a Kashmiri Pandit. So BJP workers are now staging that mega stir. This is taking place in Poonch, in Jammu and Kashmir, as you can see on your screens, with a major sort of call to address the issue. This is against the J&K targeted killings coming in. Sunilji Bhatt joining us live from Jammu. Sunilji, shocking targeted killing of another Kashmiri Pandit in the valley. There's outrage and cries for justice. Take us through what's happening on ground. Well, Abha, indeed, tragic news came earlier today. A Kashmiri Pandit who was working in his orchard was shot dead by terrorists while his brother was seriously injured in this terror attack. His injured brother is battling for his life in the hospital right now. But terrorists are sending out a message to the government that they don't want presence of the Kashmiri Pandits in the valley, and that is why you can see that protests are taking place in many parts of Jammu. And we have got the visuals of this protest in Poonch district of Jammu and Kashmir, where the BJP's minority Morcha leaders have hit the streets. They are raising slogans against Pakistan, and they are saying that Pakistan continues to sponsor terrorism against India. So, Abba, the government made tall claims that they increased security of the Kashmiri Pandits living in the valley, but the fact of the matter is that the terrorists continue to target the minuscule minority of Kashmir, that is Kashmiri Pandits, with impunity. And today another attack took place in South Kashmir, Shopian district. Unfortunately, one Kashmiri Pandit was killed and another was injured. And this terror attack has now again sent shockwaves across the country, and the Kashmiri Pandits are up in arms. They are demanding that the government must now transfer all the PM package government employees who are serving in the valley to Jammu, as Kashmiri Pandits are not safe in the valley. Their sense of security has once again been snatched. What are they also saying or demanding now when we're seeing the sloganeering coming in? You know, you described the feeling in the Pandit community, but there must be so much frustration with respect to the fact that nothing seems to be changing. Well, Abba, the Kashmiri Pandit community has been saying that they have faced attacks in the valley since 1990, and in 1990 we saw that there was ethnic cleansing of the Kashmiri Pandits. In 2010, the then UPA government headed by Prime Minister Dr. Manmohan Singh came up with an employment package for the displaced Kashmiri Pandits, and in that recruitment drive, hundreds of Kashmiri Pandits were recruited and they were asked to serve in the valley. But in the last 2 years, Kashmiri Pandits have been once again targeted. There have been killings that have taken place, and it has created fear psychosis among them. And recently, when Rahul Bhatt was assassinated, hundreds of Kashmiri Pandit government employees fled the valley, and they... All right, Sunil, thanks so much for bringing us up to speed on the situation there. Pakistan-sponsored Islamist terrorists have shot down a Kashmiri Pandit in Chotipora area of South Kashmir's Shopian district. Terrorists opened fire on civilians in an apple orchard. Sunil Kumar Bhatt succumbs to injuries, while his brother Pritambar Nath have been critically injured and have shifted to nearby hospital for treatment. The Chotipora area has been cordoned off to nab the attackers. Lieutenant Governor of J&K, Manoj Sinha and Omar Abdullah have condemned the attack, while Owaisi and Mehbooba Mufti have slammed the centre for failing to protect minorities in Kashmir, while BJP has slammed Pakistan for sponsoring terrorism in the valley. There has been a spate of targeted killings in the J&K valley over the past few months, in which both Kashmiri Pandits of the valley and other civilians have been targeted. जब हमारा वाक़ा हुआ मेरे भाई के साथ, मैं 4 बार ड्यूटी के पास गया, डीसी के पास गया, उन्होंने एक बात ये हमारी नहीं सुना, बोला अपने गांव में बैठो, उधरी मारो, उधरी करो अपना काम। इसीलिए आज हमें ये देखना पड़ा, पहले उनको लाओ, इनको यहाँ से दफा करो, गवर्नमेंट फ्रॉम सर्विस करो डीसी और ड्यूकाम साहब को। उन्होंने कुछ नहीं, उनको बोला यहाँ हर जगह सीआरपी डाली, हर जगह पुलिस डाला, यहाँ क्या किया हमें।
कौन सी सिक्योरिटी है? यही सिक्योरिटी रखी हमें यहाँ। क्या लगता है आपको कि घाटी में हालात कश्मीरी पंडितों के रहने लायक नहीं है? सर, कश्मीरी पंडितों के लिए 1990 में भी नहीं हालात ठीक थे, लेकिन बाद में कुछ सुधार हुए थे। 2017-18 के बाद अब इन्होंने फिर टारगेट किलिंग करना स्टार्ट किया, जो 90 में हो रहा था, 89-90 में यही हो रहा था जब हमने उस वक्त मास माइग्रेशन की थी। और 90 के दौर के बाद अब ये 2020-21 से स्टार्ट हो गया कि अब ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं और खासकर बार बार एक ही कम्युनिटी पर हमला कर रहे हैं। एक बंदे को ऑफिस में टारगेट करना, एक निहत्ते बेचारे को ऑफिस में टारगेट, दूसरे को बाग में करना, तीसरे को स्कूल में करना, तो जब तक एक्टिवनेस वहां नहीं है मिलिटेंटों की, तो ये कैसे होता है? और आपको लगता है कट्टरपंथ की जो सोच है वो अभी भी वहां चल रही है? लोगों में कट्टरपंथ की सोच कई लोगों में ऐसी है? कई लोगों में तो वो भी है, वो तो है ही है, वो तो साफ लग रहा है। पाकिस्तान wants bloodbath in Kashmir. We won't allow Pakistan to fulfill its nefarious designs. All those involved in targeting the Kashmiri Pandits in Chotipora area of Shopian in South Kashmir will be taken to task. They will definitely be punished. हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है, वहां पर जिस प्रकार से रैलियां निकाली जा रही हैं, कुछ लोगों का फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक बात है। उसी आधार पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। हमें ये मानना पड़ेगा जो घटना हुई है ये इस सभी चीज को मुझे लगता है थामने के लिए, रोक लगाने के लिए हुई है। जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर, उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहां पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है, और इसकी जितनी भी ज्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए, जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है, कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। ये मनस्थिति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें ये मनस्थिति यहाँ के हमारे कुछ खास किस्म के बुद्धिजीवियों को भी चेंज करनी पड़ेगी। This is another chaotic act of these the jihadi terrorists who are cowards who don't have the guts to face our army, and they are resorting to this you can say the genocide once again. But you must see, we must see that yesterday we were celebrating this Independence Day in Jammu and Kashmir, and we have seen that's how average Kashmiri was on hoisting flags on their houses in Har Ghar Tiranga Yatra program, and average Kashmiri, he was joining the government programs everywhere in the valley. But these cowards, they always look for easy targets, and they found Sunil Kumar in there amongst that. So ultimately they have succeeded. But you will see that very soon he shall be eliminated, he was tracked down and eliminated.